Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to speech processing. So this is the last set of lectures before we move on to machine learning. So we'll start talking about frequency domain methods now. So in terms of the speech signal processing aspect of the course, this would be the last set of lectures. So as soon as we're done with the frequency domain methods, we'll move on to the actual modeling of various interesting aspects here and then using those models to do interesting applications like speech recognition and so on and so forth. So let's begin. Um, If you remember, this is basically a slide from the time when we started looking at the time domain processing methods, and we looked at some of these interesting applications that we wanted to create. So to differentiate speech and non-speech waveforms, to differentiate between voiced and unvoiced speech, to extract pitch and fundamental frequency, to get the formant structure, to calculate spectrum and spectrogram. These two we have not done as yet. So we have already figured out mechanisms of extracting pitch to differentiate between voiced and unvoiced and to differentiate speech and non-speech waveforms. But how do we do these last two and other similar things? So for doing all of this, we came up with two different types of processing techniques. The time domain processing techniques that we have looked at in quite a lot of detail, and you're also doing an assignment around that. And then the frequency domain processing techniques, which we are going to look at now. And there is something called this Fourier transform that we'll be looking at in quite a lot of detail. Before we get into the details of it, let's quickly ask ourselves the question that why are we looking into these frequency domain processing methods, and why couldn't we simply stick to time domain methods? One of the reasons is that it is more convenient to determine responses of linear systems to sinusoids and their sums. So just like what we have done before, that looking at a linear time invariant system, we can characterize it by its impulse response, and then we can figure out its response to any arbitrary signal by just performing a convolution between that impulse response and the signal. So that is even easier to do when you do it in the frequency domain. So that's one of the reasons. So what we are going to do from now onwards is to go back to one of the concepts that we studied in quite a lot of detail when we were looking at the vocal tract and the source and the filter response of the vocal tract. So if you remember, our larynx, our vocal folds act as the source of either noise, random noise, or the periodic waveforms, so which then pass through the vocal tract, and various resonant frequencies get set up in the vocal tract as a result of the changing shape of the tract and the different articulators coming closer to each other or moving farther away from each other, and that vocal tract then acts as a filter. So the resultant waveform that we receive, which is speech, essentially has both characteristics in it. It has the frequency response of the vocal tract, and it has the spectrum of the excitation. So both of those things, the excitation source and the filter, both of those things are present in that waveform. So we want to somehow, if you remember, I also discussed at that point that the characteristics of what is being said, the speech recognition aspect, are present more in the vocal tract response, and the characteristics of who said it are mostly present in the excitation source. So although this is not mutually exclusive, and both of them have characteristics of the other as well, however, one good step, one useful step for us would be to come up with a mechanism of separating from the resultant signals, separating the source from the filter. So that's one of the things that we will be focusing on, and frequency domain methods really help us in doing so. So that's the basic idea of where we are going with this. We're going to take the speech waveform, we're going to take it back to the frequency domain, and then we will try to separate out the source from the filter. Or आपको याद होगा कि in the beginning when we looked at those Pratt experiments where we basically removed the vocal tract of one person and added on the vocal tract of a different person and moved the same source through that, जहाँ आपने अपनी voice को singing में convert किया था and so on. Basically आप ये वही काम कर रहे थे. So now we're ready for that, and once we will be done with this, we would have with us our good friends, the Mel frequency capsule coefficient. So that's where we are eventually going with this. Alright, so आज की वीडियो की जो एक ख़ास बात है वो ये है कि we will be including a lot of videos from some other sources in which this whole concept is
depicted in a really nice manner, और ना सिर्फ कि आपको इसका मैथ समझ आ सके बल्कि उसके पीछे की इंट्यूशन भी समझ आ सके, because really what we need from this whole lecture is not just the understanding of the formula that okay this is the formula. शायद मैं आपसे कभी भी ये ना कहूँ कि आप फॉर्मूला प्रूव करने के लिए बैठ जाएं, मैथमेटिकली पूरा उसका फॉर्मूला प्रूव करें या वो सारा कुछ, तो उसकी हमें इस कोर्स में ज़रूरत नहीं है. What we need is that you really should understand the formula, you should understand the math behind it, and you should understand intuitively and practically what it's actually doing. So जब आप इसका कोड लिख रहे होंगे, आप ये काम कर रहे होंगे, तो आपको इसकी complete practical understanding होना ज़रूरी है. तो उसके लिए I'll be including a lot of videos, but let's begin with a basic concept which is kind of pivotal and central to everything that we'll be discussing today. And here is the concept. Any periodic or for that matter aperiodic signal, ये असल में दो अलग अलग theorems हैं जिनको मैंने combine करके इकट्ठा लिख दिया है. Any periodic signal can be represented as the weighted sum of sinusoids. So that's the first concept. इसको by the way हम Fourier series कहते हैं कि किसी भी periodic signal को आप construct कर सकते हैं using a weighted sum of sinusoids. So this is really a big concept. ये अभी एक जुमले में इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा. What you're trying to say here is that take any signal, any periodic signal in the world, and that signal can be thought of and can be shown to be, can be proven to be constructed out of a sum of sinusoids, which is basically a weighted sum. So यहाँ नीचे आप वो sum देख भी रहे हैं. So for example, ये आपके पास एक signal है f of t, ये एक ft, ये एक periodic signal है, and here you are constructing it with some fundamental frequency. मैं ये a0 की बात अभी करता हूँ. Some fundamental frequency. So this is like a cosine. A1 is the weight, and this cos 2 pi ft. So here you have the frequency f, जिसके साथ ये इसकी फंडामेंटल आप समझ लीजिए कि आपने एक कोसाइन लिया है, और उसके बाद इसका आपने फर्स्ट हार्मोनिक लिया है. सो दिस इज लाइक 2 into 2f. सो f की जगह 2f हो गया, यहाँ पर आपके पास 2 into 3f हो गया, एंड so on and so forth. So ये इसके अब हार्मोनिक्स चल रहे हैं. So you took the cosine of some fundamental frequency, और उसके बाद आपने उसके harmonics add किए. Then you go to the sines, and then you have the fundamental frequency, and this is 2f, and this is 3f, and so on and so forth. आप इन सबको ऐड करते चले गए. You add in a DC component which has a frequency 0. So ये shift indicate करता है कि आपके इस पूरे के पूरे signal की shift कितनी है. क्या ये equilibrium के ऊपर है, बिल्कुल इस तरह से है, या it's a shifted version of it. So ये shift जो है वो यहाँ से आ रही है, a0 से आ रही है, and this is the recipe, and it goes in both directions. So अब यहाँ से जो बात समझना आपने शुरू करनी है ना, that's the core concept जिसकी तरफ हम जा रहे हैं. And that concept is that take any periodic signal in the world, you can represent it as a sum of sinusoids. And the other way around is that you can basically construct any signal, any complex periodic signal out of a sum of sinusoids. So अब ये दो directions हो गई. एक हो गई given a signal, क्या आप मुझे उसके component sinusoids निकाल कर दे सकते हैं. That's one direction of it. And given the component sinusoids, can I construct a signal out of it? And both of these things, both of these directions actually work. एक direction में you take a time domain signal and you convert it into frequency domain. So that's essentially जिस चीज़ की बात यहाँ हो रही है. अभी ये आपका जो सिग्नल है, this is a time domain signal. In a frequency domain, जहाँ पे आपका जो independent variable है वो frequency होगी, वहाँ पर this would, because this looks like a pure sine wave, यहाँ पे ये एक frequency पे correspond करेगा. ठीक है? So this is one direction. So take frequency and create time domain signal, or take a time domain signal and create frequency domain representation of it. These are the two directions in which we are interested. यहाँ by the way आपको इसका general formula नजर आ रहा है. एक चीज़ मैं और clear कर दूँ कि ये formula आपको बहुत सी जगहों पर बहुत से मुख्तलिफ अंदाज में लिखा हुआ नजर आएगा. इसको लिखने के कई अंदाज हैं. अगर मैं यहाँ इसको जो है वो थोड़ा सा और प्रिसाइज करके लिखता तो इसमें शायद इसके लिखने का अंदाज कुछ और होता, लेकिन I just want to give you the basic idea here. So here is the general way to represent all of this. This is a0, which is the DC component, plus the cosines and the sum of sines. ठीक है? All right. So यहाँ पे हमने अब दो चीज़ों की बात की है. एक हमने बात की है Fourier series की. So Fourier series जो पहला claim करती है वो ये करती है कि you take any periodic signal in the world, in the universe, and you can represent it as the weighted sum of
a fundamental and its harmonics, और ये sinusoids के लिए यानी sines और cosines के लिए, ठीक है, ये जिसकी बात हमने अभी की है. So it's used to represent a periodic function by a discrete sum of complex exponentials, जो कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि complex exponential जो आप इससे पहले हम बड़ी तफसील से पढ़ के आए हैं कि how it can be projected on the vertical and horizontal axes and you can show them to be sines and cosines, ठीक है, तो ये आपको मालूम है. Now what about aperiodic signals? तो यही फोरियर सीरीज को हम एक्सटेंड करते हैं बाय सेइंग दैट फॉर एन अपीरियोडिक सिग्नल, जो फॉर एग्जांपल एक इम्पल्स है जो कि एक दफा सिर्फ अकर हुआ है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम टिल द एंड ऑफ टाइम, तो it could be basically thought of as a signal with the time period equal to approaching to infinity. So ये एक ऐसा सिग्नल है जिसका टाइम पीरियड जो है that approaches to infinity. It has just a very long time period. इसको हमने repeat होते इसलिए नहीं देखा. So now by doing that extension, you can basically create this Fourier transform, which is used to represent a general or a non-periodic function by a continuous superposition of or integral of complex exponentials. यानी वही वाली बात दोबारा आ जाएगी, बस सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि given enough ingredients in terms of sinusoids, you can also produce an aperiodic signal. उसकी एक मिसाल जो है वो आपका खुद impulse भी है. मैंने आपसे कहा था ना, ये मैं आपसे create करवाऊंगा, तो ये आपसे मैं कहूँगा कि आप एक दफ़ा इसको खुद MATLAB में करने की कोशिश कीजिएगा. वैसे तो जो मैं आपको वेबसाइट्स के रेफरेंसेस दे रहा हूँ, कहीं पे जो है वो इस तरह के एप्लेट्स हैं इसमें जिसमें आप ये खुद प्ले भी कर सकते हैं, बट नाउ यू कैन बेसिकली डू इट योरसेल्फ. सो जस्ट टेक a lot of cosines which are all in phase coherence, which essentially means कि उन सब का जो है वो 1 यहीं पर होना चाहिए, 0 के यानी origin के ऊपर. So you take one cosine, let's say ये आपकी एक cosine हो गई, ये मैंने थोड़ी सी यूं बना दी है, let me just redraw it. So this is one of your cosines, and take now of a different frequency, let's say another cosine, and another frequency, let's say another cosine, and so on and so forth. आप इन सबको ऐड करते चले जाएं. So शुरू से शुरू हो जाएं from a very low frequency और cosines ऐड करते चले जाएं, और यूनिफॉर्मली आपने करनी है, और as small as possible इसका इंटरवल रखिए, क्योंकि essentially you're trying to approximate an integral here. तो उनको ऐड करते चले जाएं. अब इनमें क्या चीज़ कॉमन रहेगी? इन सब के सब का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मैच हो रहा है एट द ओरिजिन. तो ओरिजिन के ऊपर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जबकि बाकी इनकी सारी की सारी वैल्यूज, बिकॉज यूर यूजिंग कोसाइंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैंसिल करती जाएंगी. एंड नाउ टू अप्रोक्सीमेट इट बेटर एज अ सिंगल शार्प पीक एट द ओरिजिन, यू नीड बेसिकली इन्फिनिट cosines. लेकिन even for a finite number of cosines, just write a for loop and you'll see कि बड़ी जल्दी वो sharp peak जो है वो emerge होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो you can essentially use this same mechanism of adding together sinusoids to produce periodic and also aperiodic signals. अच्छा, अब यहाँ पर ना बहुत सी और कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा ग्लॉस ओवर भी करूँगा कुछ कॉन्सेप्ट्स पर. सो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कि आप इस सब कुछ को कंटिन्यूस डोमेन में भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम ये सारा कुछ इंटेग्रल्स की मदद से करते हैं. हम इसको डिस्क्रीट डोमेन में भी ला सकते हैं, विच इज़ एसेंशली लाइक अ सैम्पल्ड वर्जन ऑफ द कंटिन्यूस वर्जन ऑफ द ट्रांसफॉर्म. बट एनी हाउ, आगे इस स्लाइड के बाद से मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल ग्राउंड अप बनाने की कोशिश करूंगा, एंड देन विल गेट इनटू अ लॉट ऑफ वीडियोस वेयर यू विल बी गेटिंग सम मोर विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म एंड ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन. और साथ ही साथ आप उस चीज़ों को खुद से कर भी सकते हैं, क्योंकि बेसिकली राइट कोड फॉर दैट एंड यू कैन सी दैट इट रियली वर्क्स. So your Fourier transform in this sense can be just viewed as a limit of the Fourier series of a function with a period approaching to infinity. So the limits of integration change from one period to essentially minus infinity to positive infinity. तो ये इन दोनों का खैर बेसिकली फ़र्क है, लेकिन अभी क्योंकि हमने इसको देखा ही नहीं है, अभी तो मैंने आपको उसका फॉर्मूला भी नहीं दिखाया, तो इसलिए इसको यहीं पर पॉज करके आगे बात को बढ़ाते हैं. All right. So this is your first actual example. So you have here a sine wave of frequency f. So वो आपको यहाँ नजर आ रही है, और amplitude lambda. Now अब आपको एक ऐसी चीज़ हम कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहे हैं जो यूजुअली हमें नहीं लगता कि वो बड़ी आसानी से साइंस को ऐड करके बन सकेगी, और इसमें आपकी ना वो जो इंट्यूशन अभी मैंने इम्पल्स की बनाई है वो भी थोड़ी सी क्रिएट हो जाएगी. आप इसके अंदर ऐड करें एक और साइन वेव विद फ्रीक्वेंसी 3 times f. सो इसका थर्ड हार्मोनिक लें और उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 1/3 कर दें. Just add them together and see कि ये एक बड़ी interesting सी shape ले रहा है. Okay, now add another sine wave with which is the fifth harmonic at 1/5 of the amplitude, and it's going to become this. After adding 15 harmonics just like this, it will become
somewhat like this. ये किस तरह की बनती जा रही है? ये कौन सी wave लग रही है? This is a square wave. This is approximating a square wave. Now the problem is a square wave is a really difficult kind of a signal to replicate, especially using these time varying signals, क्योंकि इसके अंदर ये जो discontinuities आती हैं, ये वाले points, ये approximate करना बड़ा मुश्किल होता है. These are like impulses. एक straight line के अंदर immediate change है, sudden change है from high to low and low to high. और ये सडन चेंजेस आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये ऐड होते जाएंगे, 5th हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक, 9th हार्मोनिक, 11th हार्मोनिक, 13th हार्मोनिक, 15th हार्मोनिक, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ स्क्वायर वेव बनती चली जाएगी. You can try this. You can basically just, you can even do this in Excel. Excel के अंदर जाकर एक साइन का जो है वो एक टेबल बना दें, 2-3 साइकिल्स का, 3-4 साइकिल्स उसमें प्लॉट कर दें किसी भी फ्रीक्वेंसी के. उसके बाद उसका अगले हार्मोनिक्स लाना शुरू करें, 3rd, 5th, 7th at 1/3, 1/7, 1/5 of the amplitude, and you're gonna see this. ठीक है. अच्छा, अब हो क्या रहा है? So essentially this is what is happening. So you can see here that you are essentially constructing this square wave. So this GIF, just give it a second to process. So basically you're producing it as a sum of these sine components. In this bar graph you essentially see the contribution of each of them, और ये contribution essentially वही आ रही है जो कि 1/3, 1/5 and so on and so forth थी. So ये bars की जो height है ये indicate कर रही है कि हर एक frequency की contribution क्या है इस final waveform के अंदर. So आपको contribution नजर आ रही है, and then once you combine all of them together, which is superposition, आपको अच्छी तरह मालूम है, हमने superposition पहले पढ़ा था interference के अंदर, you essentially get an approximation of the square wave. Now interestingly, the one thing that you really want to start building your intuition about is what is actually happening here. This, अगर आप इस diagram पर वापस आएं, so this is your fundamental frequency, और अगर आपको याद हो तो हमने इसको सोच यानी visualize करना सीखा था, how it relates to a rotating circle. Now think of another rotating circle at a higher frequency and a smaller amplitude attached at the end of your first circle, and now start rotating both of them, and this is what gives you these smaller peaks. और ये वो चीज़ है जो अगली वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर वो बात यहीं से शुरू होगी, and it's going to approximate for you a square wave, and it will also approximate for you a triangular wave. So ये दोनों की, इनफैक्ट वो sawtooth को आपके लिए करेगा, so sawtooth wave इन दोनों को approximate करके वो आपको दिखाएगा. So essentially what's happening is this is the intuition that you need to have in your heads, that when you're creating these waves, this is what is happening. So this is your fundamental, and this is the 3rd harmonic, the 5th harmonic, the 7th harmonic at 1/3, 1/5 and 1/7 of the amplitude, and you can see here that once you added this 3rd harmonic in, और इन दोनों को आपने सम किया था, तो सम करने की वजह से ये हेड टू टेल ऐड हो गए हैं दोनों वेक्टर्स, एंड नाउ दिस वन इज बेसिकली द रैपिडली मूविंग कंपोनेंट ऑफ इट, जो कि इसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है. एंड वंस यू ऐड दिस 5th हार्मोनिक, ये अब उस ग्रीन सर्कल के ऊपर ब्लू सर्कल ऐड हो गया है. दिस इज लाइक एन आर्म with 3 separate parts which are now producing it, this drawing this wave for you. So essentially you are breaking down your signal in these rotating circles, and that essentially what I've just said is the Fourier transform. This is exactly what you want to do. और अब इस वीडियो के बाद और एक आध वीडियोस के बाद हम इतनी इंट्यूशन बिल्ड कर लेंगे कि हमें, जब इसका फॉर्मूला मैं आपके सामने रिवील करूंगा जो कि इन वीडियोस में आना भी शुरू हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला देख के वो आपको बिल्कुल भी जो है वो इंटिमिडेटिंग नहीं लगेगा. इनफैक्ट यू विल बी एबल टू सी ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन इट, एंड यू अंडरस्टैंड कि ये क्या कर रहा है. ठीक है जनाब. सो लेट्स वॉच द फर्स्ट वीडियो. इस वीडियो में बाय द वे एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर आपको दे दूं, द म्यूजिक इज़ इल प्लेस्ड, सो उसके बगैर ये वीडियो बहुत बेहतर होती, बट द वॉइस इन द बैकग्राउंड इज़ नीडेड, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट रिमूव इट. सो इट लुक्स लाइक कि आप कोई जो है वो किसी हॉरर मूवी का या एक्शन मूवी का ट्रेलर देख रहे हैं, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्चुअल stuff which is happening in the video and you'll be fine. We have an x-axis and a y-axis. Let us also create an axis that represents the angle theta. The green line rotates by the angle theta. For each value of theta, the x-coordinate represents the cosine of theta,
and the y-coordinate represents the sine of theta. The angle theta can range anywhere between negative infinity and positive infinity. This two-dimensional pattern is what we refer to as a sine wave. We can change the sine wave's amplitude, phase, and frequency. Suppose we have two sine waves that are identical except for the fact that they have different amplitudes. If we add these two sine waves together, the result can be represented graphically as shown. Now, suppose that the two sine waves also have different phases. The sum of these two waveforms can be represented graphically like this. So long as the two sine waves have the same frequency, their sum will always be another sine wave of the exact same frequency, but with a different amplitude and phase. Now, suppose that the two sine waves also have a different frequency. If we add together sine waves of different frequencies, then the resultant waveform is no longer a sine wave. We can add together three sine waves.
we can add together 4 sine waves. We can add together 5 sine waves. In fact, we can add together an infinite number of sine waves. Here, by adding together an infinite number of sine waves, we have produced a pattern that looks like this. Now, let's add together a different set of sine waves. By adding an infinite number of sine waves, we have produced this other pattern that looks like this. As it turns out, every possible waveform and function in existence can be generated by just adding together different sets of sine waves. In the 2 examples shown here, the sum of all the sine waves happened to be repeating waveforms. In these cases, only certain frequencies of sine waves were needed. And each of these sine waves had a measurable amplitude. Non-repeating waveforms can also be generated by adding sine waves together. But in these cases, sine waves of every possible frequency may be needed.
and each of these sine waves have an amplitude that is infinitely small. When an infinite number of sine waves with infinitely small amplitudes are added together, the result can be a waveform that we can see and measure. This is the same way in which, if we add together an infinite number of infinitely thin sheets of paper, although each sheet of paper by itself has 0 volume, their combination can be an object with an actual volume that we can see and measure. Some sheets of paper can be larger than others. Although the volume of each sheet of paper by itself is 0, when we have an infinite number of sheets of paper added together, we will be able to measure the object's density, and the density in some parts of the object will be higher than the density in other parts of the object. Similarly, when we add together an infinite number of sine waves of infinitely small amplitudes, we will be able to measure the density of frequencies. And this density of frequencies will be higher around some frequencies than others. This is what we refer to as the frequency spectrum of a waveform. All signals and waveforms have a frequency spectrum. All right, so you watched the first video. Now you have an idea in your mind कि आप किसी भी सिग्नल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं as a sum of these sinusoids, and these are weighted sinusoids, जिसमें weight indicate कर रहा है कि एक particular sinusoid का कितना contribution है एक signal के अंदर. So you have a signal like this. For example, in time domain, you have a signal like this, and in frequency domain, once you convert it into frequency domain, it may look like, I don't know, somewhat like this, where each of these points correspond to a particular frequency, not a time. So another thing that you need to remember, और ये बड़ी important बात है, कि सब कुछ में assumption वही linear और time invariance की चल रही है कि आपका पूरे का पूरा सिग्नल अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करता है, या तो वो पीरियोडिक सिग्नल है, और या अगर वो पीरियोडिक सिग्नल है तो अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन कर रहा है, तब ये conversion from the time to frequency domain would make sense. Otherwise these properties are changing a lot. Like जब हम speech में आएंगे तो properties change हो रही होंगी. तो अब फौरन बाद जब हम पूरी तरह से transform समझ लेंगे तो उसके बाद we're just going to do exactly the same thing that we did before. हम इसका short time version लेंगे और उसका transform find करेंगे. इतनी जगह की frequency recipe क्या है, फिर इतनी जगह की frequency recipe क्या है, assuming again कि वो recipe slowly change हो रही है due to the physical nature of the vocal tract. पहली बात. इससे पहले कि मैं आपको आगे भेजूं ये समझने के लिए, एक सवाल मैं आपसे अगर अभी पूछूं और आप अपने आप से खुद करें, given a signal like this, how can I come up with a recipe of all the frequencies which are present in this signal? अगर आप पॉज करें और थोड़ा सा सोचें इस बात के ऊपर, ये पहले भी मैं आपको सोचने के लिए कह चुका हूं, पॉज करें और सोचें इस बात के ऊपर कि इस सिग्नल से मैं कैसे निकाल सकता हूं कि इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है. और इसेंशियली जो इसका, पॉज करें और सोच लें ताकि फिर मैं अब जवाब देने लगाऊं, जो इसका एक हल आपके जहन में आएगा वो ये आएगा, सिंपली इटरेट ओवर ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज
0 से शुरू हो जाएं और सारी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज पे इटरेट करें, हर फ्रीक्वेंसी को इस सिग्नल के साथ कोरिलेट करें और कोरिलेट करने के बाद देख लें कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी इसके साथ कोरिलेट होने के बाद हाई वैल्यू देती है. मेक सेंस? This is something very similar to what the Fourier transform is doing. Actually, too similar. अभी हम इसको देखेंगे तो आपको ये चीज़ अगली वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. So अगली वीडियो ना सिर्फ कि आपको इसकी इंट्यूशन देगी बल्कि उस फॉर्मूला की कुछ कॉम्प्लिकेशंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देगी. एंड नाउ बिकॉज यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो, द रोटेटिंग सर्कल्स वोंट कंफ्यूज यू. एक तो हम बड़े अरसे से बात करते आ रहे हैं, ई रेज़ टू पावर आई पाई को आप अच्छी तरह जानते हैं. दूसरी बात यह है कि अब आपका अब तक का जो कॉन्टेक्स्ट बन गया है इसकी बेस के ऊपर होपफुली द नेक्स्ट वीडियो वुड बी एक्सट्रीमली enjoyable for you. It is from a channel that I follow a lot. I highly recommend it if you are interested in basically getting an intuitive grip of the mathematical concepts जो आपने सारी ज़िंदगी पढ़े हैं. It's an amazing channel. और जो है वो the reason I embedded this video in my lecture is because अगर मैं खाली आपको as a reference दूंगा तो आप में से बहुत से लोग नहीं देखेंगे जाकर. And the kind of visualizations that the guy uses are simply amazing. So with that introduction, let's begin. This right here is what we're going to build to this video, a certain animated approach to thinking about a super important idea from math, the Fourier Transform. For anyone unfamiliar with what that is, my number one goal here is just for the video to be an introduction to that topic. But even for those of you who are already familiar with it, I still think that there's something fun and enriching about seeing what all of its components actually look like. The central example to start is going to be the classic one, decomposing frequencies from sound. But after that, I also really want to show a glimpse of how this idea extends well beyond sound and frequency into many seemingly disparate areas of math and even physics. Really, it is crazy just how ubiquitous this idea is. Let's dive in. This sound right here is a pure A, 440 beats per second, meaning if you were to measure the air pressure right next to your headphones or your speaker as a function of time, it would oscillate up and down around its usual equilibrium in this wave, making 440 oscillations each second. A lower pitch note, like a D, has the same structure, just fewer beats per second. And when both of them are played at once, what do you think the resulting pressure versus time graph looks like? Well, at any point in time, this pressure difference is going to be the sum of what it would be for each of those notes individually, which, let's face it, is kind of a complicated thing to think about. At some points, the peaks match up with each other, resulting in a really high pressure. At other points, they tend to cancel out. And all in all, what you get is a wave-ish pressure versus time graph that is not a pure sine wave. It's something more complicated. And as you add in other notes, the wave gets more and more complicated. But right now, all it is a combination of 4 pure frequencies. So it seems needlessly complicated given the low amount of information put into it. A microphone recording any sound just picks up on the air pressure at many different points in time. It only sees the final sum. So our central question is going to be how you can take a signal like this and decompose it into the pure frequencies that make it up. Pretty interesting, right? Adding up those signals really mixes them all together. So pulling them back apart feels akin to unmixing multiple paint colors that have all been stirred up together. The general strategy is going to be to build for ourselves a mathematical machine that treats signals with a given frequency differently from how it treats other signals. To start, consider simply taking a pure signal, say with a lowly 3 beats per second, so that we can plot it easily. And let's limit ourselves to looking at a finite portion of this graph, in this case the portion between 0 seconds and 4.5 seconds. The key idea is going to be to take this graph and sort of wrap it up around a circle. Concretely, here's what I mean by that. Imagine a little rotating vector where at each point in time, its length is equal to the height of our graph for that time. So high points of the graph correspond to a greater distance from the origin, and low points end up closer to the origin. And right now, I'm drawing it in such a way that moving forward 2 seconds in time corresponds to a single rotation around the circle. Our little vector drawing this wound up graph is rotating at half a cycle per second. So this is important. There are 2 different frequencies at play here.
There's the frequency of our signal, which goes up and down 3 times per second. And then, separately, there's the frequency with which we're wrapping the graph around the circle, which at the moment is half of a rotation per second. But we can adjust that second frequency however we want. Maybe we want to wrap it around faster, or maybe we go and wrap it around slower. And that choice of winding frequency determines what the wound up graph looks like. Some of the diagrams that come out of this can be pretty complicated, although they are very pretty. But it's important to keep in mind that all that's happening here is that we're wrapping the signal around a circle. The vertical lines that I'm drawing up top, by the way, are just a way to keep track of the distance on the original graph that corresponds to a full rotation around the circle. So lines spaced out by 1.5 seconds would mean it takes 1.5 seconds to make one full revolution. And at this point, we might have some sort of vague sense that something special will happen when the winding frequency matches the frequency of our signal, 3 beats per second. All of the high points on the graph happen on the right side of the circle, and all of the low points happen on the left. But how precisely can we take advantage of that in our attempt to build a frequency unmixing machine? Well, imagine this graph as having some kind of mass to it, like a metal wire. This little dot is going to represent the center of mass of that wire. As we change the frequency and the graph winds up differently, that center of mass kind of wobbles around a bit. And for most of the winding frequencies, the peaks and the valleys are all spaced out around the circle in such a way that the center of mass stays pretty close to the origin. But when the winding frequency is the same as the frequency of our signal, in this case 3 cycles per second, all of the peaks are on the right and all of the valleys are on the left, so the center of mass is unusually far to the right. Here, to capture this, let's draw some kind of plot that keeps track of where that center of mass is for each winding frequency. Of course, the center of mass is a 2-dimensional thing. It requires 2 coordinates to fully keep track of, but for the moment, let's only keep track of the x-coordinate. So for a frequency of 0, when everything is bunched up on the right, this x-coordinate is relatively high. And then as you increase that winding frequency, and the graph balances out around the circle, the x-coordinate of that center of mass goes closer to 0, and it just kind of wobbles around a bit. But then, at 3 beats per second, there's a spike, as everything lines up to the right. This right here is the central construct. So let's sum up what we have so far. We have that original intensity versus time graph, and then we have the wound up version of that in some 2-dimensional plane. And then, as a third thing, we have a plot for how the winding frequency influences the center of mass of that graph. And by the way, let's look back at those really low frequencies near 0. This big spike around 0 in our new frequency plot just corresponds to the fact that the whole cosine wave is shifted up. If I had chosen a signal that oscillates around 0, dipping into negative values, then, as we play around with various winding frequencies, this plot of the winding frequency versus center of mass would only have a spike at the value of 3. But negative values are a little bit weird and messy to think about, especially for a first example, so let's just continue thinking in terms of the shifted up graph. I just want you to understand that that spike around 0 only corresponds to the shift. Our main focus, as far as frequency decomposition is concerned, is that bump at 3. This whole plot is what I'll call the almost Fourier transform of the original signal. There's a couple small distinctions between this and the actual Fourier transform, which I'll get to in a couple minutes, but already you might be able to see how this machine lets us pick out the frequency of a signal. Just to play around with it a little bit more, take a different pure signal, let's say with a lower frequency of 2 beats per second, and do the same thing. Wind it around a circle. Imagine different potential winding frequencies, and as you do that, keep track of where the center of mass of that graph is, and then plot the x-coordinate of that center of mass as you adjust the winding frequency. Just like before, we get a spike when the winding frequency is the same as the signal frequency, which in this case is when it equals 2 cycles per second.
But the real key point, the thing that makes this machine so delightful, is how it enables us to take a signal consisting of multiple frequencies and pick out what they are. Imagine taking the two signals we just looked at, the wave with 3 beats per second and the wave with 2 beats per second, and add them up. Like I said earlier, what you get is no longer a nice pure cosine wave, it's something a little more complicated. But imagine throwing this into our winding frequency machine. It is certainly the case that as you wrap this thing around, it looks a lot more complicated. You have this chaos and chaos and chaos and chaos, and then whoop, things seem to line up really nicely at 2 cycles per second. Then as you continue on, it's more chaos and more chaos and more chaos, 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 chaos. Whoop, things nicely align again at 3 cycles per second. And like I said before, the wound-up graph can look kind of busy and complicated, but all it is the relatively simple idea of wrapping the graph around a circle. It's just a more complicated graph and a pretty quick winding frequency. Now what's going on here with the two different spikes is that if you were to take two signals and then apply this almost Fourier transform to each of them individually, and then add up the results, what you get is the same as if you first added up the signals and then applied this almost Fourier transform. And the attentive viewers among you might want to pause and ponder and convince yourself that what I just said is actually true. It's a pretty good test to verify for yourself that it's clear what exactly is being measured inside this winding machine. Now this property makes things really useful to us because the transform of a pure frequency is close to 0 everywhere except for a spike around that frequency. So when you add together two pure frequencies, the transform graph just has these little peaks above the frequencies that went into it. So this little mathematical machine does exactly what we wanted. It pulls out the original frequencies from their jumbled up sums, unmixing the mixed bucket of paint. And before continuing into the full math that describes this operation, let's just get a quick glimpse of one context where this thing is useful: sound editing. Let's say that you have some recording and it's got an annoying high pitch that you would like to filter out. Well, at first, your signal is coming in as a function of various intensities over time, different voltages given to your speaker from 1 millisecond to the next. But we want to think of this in terms of frequencies. So, when you take the Fourier transform of that signal, the annoying high-pitched is going to show up just as a spike at some high frequency. Filtering that out by just smushing the spike down, what you'd be looking at is the Fourier transform of a sound that's just like your recording, only without that high frequency. Luckily, there's a notion of an inverse Fourier transform that tells you which signal would have produced this as its Fourier transform. I'll be talking about that inverse much more fully in the next video, but long story short, applying the Fourier transform to the Fourier transform gives you back something close to the original function. Kind of. This is a little bit of a lie, but it's in the direction of truth. And most of the reason that it's a lie is that I still have yet to tell you what the actual Fourier transform is, since it's a little more complex than this x-coordinate of the center of mass idea. First off, bringing back this wound-up graph and looking at its center of mass, the x-coordinate is really only half the story, right? I mean, this thing is in 2 dimensions. It's got a y-coordinate as well. And as is typical in math, whenever you're dealing with something 2-dimensional, it's elegant to think of it as the complex plane, where this center of mass is going to be a complex number that has both a real and an imaginary part. And the reason for talking in terms of complex numbers, rather than just saying it has 2 coordinates, is that complex numbers lend themselves to really nice descriptions of things that have to do with winding and rotation. For example, Euler's formula famously tells us that if you take e to some number times I, you're going to land on the point that you get if you were to walk that number of units around a circle with radius 1, counterclockwise, starting on the right. So, imagine you wanted to describe rotating at a rate of 1 cycle per second. One thing that you could do is take the expression e to the 2 pi times I times t, where t is the amount of time that has passed. Since for a circle with radius 1, 2 pi describes the full length of its circumference. And this is a little bit dizzying to look at, so maybe you want to describe a different frequency, something lower and more reasonable. And for that, you would just multiply that time t in the exponent by the frequency, f. For example, if f was 1/10, then this vector makes 1 full turn every 10 seconds, since the time t has to increase all the way to 10 before the full exponent looks like 2 pi I.
I have another video giving some intuition on why this is the behavior of e to the x for imaginary inputs, if you're curious, but for right now, we're just going to take it as a given. Now, why am I telling you this, you might ask? Well, it gives us a really nice way to write down the idea of winding up the graph into a single tight little formula. First off, the convention in the context of Fourier transforms is to think about rotating in the clockwise direction. So let's go ahead and throw a negative sign up into that exponent. Now, take some function describing a signal intensity versus time, like this pure cosine wave we had before, and call it g of t. If you multiply this exponential expression times g of t, it means that the rotating complex number is getting scaled up and down according to the value of this function. So you can think of this little rotating vector with its changing length as drawing the wound up graph. So think about it, this is awesome. This really small expression is a super elegant way to encapsulate the whole idea of winding a graph around a circle with a variable frequency, f. And remember, the thing we want to do with this wound up graph is to track its center of mass. So think about what formula is going to capture that. Well, to approximate it at least, you might sample a whole bunch of times from the original signal, see where those points end up on the wound up graph, and then just take an average. That is, add them all together as complex numbers, and then divide by the number of points that you've sampled. This will become more accurate if you sample more points which are closer together. And in the limit, rather than looking at the sum of a whole bunch of points divided by the number of points, you take an integral of this function divided by the size of the time interval that we're looking at. Now, the idea of integrating a complex valued function might seem weird, and to anyone who's shaky with calculus, maybe even intimidating, but the underlying meaning here really doesn't require any calculus knowledge. The whole expression is just the center of mass of the wound up graph. So great! Step by step, we have built up this kind of complicated, but let's face it, surprisingly small expression for the whole winding machine idea that I talked about. And now there is only one final distinction to point out between this and the actual honest-to-goodness Fourier transform. Namely, just don't divide out by the time interval. The Fourier transform is just the integral part of this. What that means is that instead of looking at the center of mass, you would scale it up by some amount. If the portion of the original graph you were using spanned 3 seconds, you would multiply the center of mass by 3. If it was spanning 6 seconds, you would multiply the center of mass by 6. Physically, this has the effect that when a certain frequency persists for a long time, then the magnitude of the Fourier transform at that frequency is scaled up more and more. For example, what we're looking at right here is how when you have a pure frequency of 2 beats per second and you wind it around the graph at 2 cycles per second, the center of mass stays in the same spot, right? It's just tracing out the same shape. But the longer that signal persists, the larger the value of the Fourier transform at that frequency. For other frequencies though, even if you just increase it by a bit, this is canceled out by the fact that for longer time intervals, you're giving the wound up graph more of a chance to balance itself around the circle. That is a lot of different moving parts, so let's step back and summarize what we have so far. The Fourier transform of an intensity versus time function, like g of t, is a new function, which doesn't have time as an input, but instead takes in a frequency, what I've been calling the winding frequency. In terms of notation, by the way, the common convention is to call this new function g hat with a little circumflex on top of it. Now the output of this function is a complex number, some point in the 2D plane that corresponds to the strength of a given frequency in the original signal. The plot that I've been graphing for the Fourier transform is just the real component of that output, the x-coordinate. But you could also graph the imaginary component separately if you wanted a fuller description. And all of this is encapsulated inside that formula that we built up. And out of context, you can imagine how seeing this formula would seem sort of daunting. But if you understand how exponentials correspond to rotation, how multiplying that by the function g of t means drawing a wound up version of the graph, and how an integral of a complex valued function can be interpreted in terms of a center of mass idea, you can see how this whole thing carries with it a very rich intuitive meaning. And by the way, one quick small note before we can call this wrapped up.
Even though in practice, with things like sound editing, you'll be integrating over a finite time interval, the theory of Fourier transforms is often phrased where the bounds of this integral are negative infinity and infinity. Concretely, what that means is that you consider this expression for all possible finite time intervals, and you just ask, what is its limit as that time interval grows to infinity? Alright, so I hope you really enjoyed that और I hope कि आपको समझ भी आ गई चीज़ और आपको मज़ा भी आया होगा. अगर कहीं कोई बात अभी भी कंफ्यूज कर रही है तो I would recommend just replay some parts of that video ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए. और जब आपको समझ में आ जाएगा तो तब हम अब बिल्कुल रेडी हैं discrete Fourier transform को देखने के लिए. Essentially discrete Fourier transform is just, you can think of it as something which has very similar properties as of the Fourier transform जो अभी आप देख कर आए हैं, but it's like it's a sampled version of it. यानी अगर आपके पास डिजिटल डोमेन के अंदर discrete time signal है तो जब आप उसका Fourier transform लेंगे तो that would be the discrete Fourier transform. So ये इसका फॉर्मूला है और ये इसकी बहुत एक हेल्पफुल एक intuitive understanding है जो इसके नीचे लिखी हुई है. I have cited all the references here जितनों की यहाँ पर ज़रूरत थी. One more reference that I'll cite in the next slide is basically again better explained, खालिद आज़ाद की जो वेबसाइट है जिसको हम पहले भी डिस्कस करते रहे. ऑल राइट, और वो जो रोटेटिंग सर्कल्स अभी आप देख कर आए हैं ना, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जस्ट गो टू दिस वेबसाइट एंड यू कैन बेसिकली प्ले विद द कॉन्सेप्ट योरसेल्फ. यू कैन मेक दोज सर्कल्स रोटेट एंड यू कैन सी हाउ दोज पॉइंट्स आर एवरेज्ड आउट एंड हाउ इट रिजल्ट्स इन the various centers जो कि वो उसमें ढूंढ रहा था उस averages के. All right, so let's look at this formula. This is the formula now for the discrete Fourier transform. और अब हम इसको पूरा एक एक करके step by step समझने की कोशिश करते हैं. Essentially what this formula is doing is कि आपके पास ये सिग्नल है, टाइम डोमेन सिग्नल xn है आपके पास. आप इस xn में इंटरेस्टेड हैं कि आप इसके कंपोनेंट्स को जानना चाहते हैं कि किस चीज़ से मिलाकर ये xn बनाया गया, right? So this is the signal in which we are interested. ठीक है, ये पहली चीज़ है. The second thing that we have here is essentially this analyzer, this probe. मैं इसको मिटा देता हूँ, ये blue करने से बहुत ज़्यादा clear नहीं रहा. But you have this probe here. I would call this a probe. So what the probe is essentially doing is that it's going over the frequencies one by one. ये n over n को भी छोड़ दीजिए, मैं भी explain कर देता हूँ. It's going over all of the frequencies k one by one. तो एक वक्त में ये एक k को देखता है और essentially इस k को मल्टीप्लाई करता है xn के साथ, जिसका मतलब आपने देख लिया था कि आप xn को essentially रैप अराउंड कर रहे हैं इस एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ. एंड देन इट फाइंड्स आउट कि जब ये रैप अराउंड होता है and you take a bunch of samples around that point उस रोटेशन के बाद, and then you basically take an average and you figure out whether that average cancelled itself out and it's close to the mean, it's close to the equilibrium position, or it's off the center, which means कि the peaks aligned somehow. इतनी सी बात है सिर्फ जो इसमें समझने की है. अच्छा, अब यहाँ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर कुछ टर्म्स और आ रही हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू. सो टू फाइंड द एनर्जी एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एंड द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज दिस k. सो k की फ्रीक्वेंसी के अंदर, सो अब आप ये यहाँ ये भी देख लें कि दिस होल थिंग इज हैपनिंग इन अ बिग लूप. You're going over all the frequencies one by one, or in this case you're first looking at this frequency k. So the k, it goes from 1 to n. So जितनी आप frequencies यहाँ पर देख रहे होंगे. So to find the energy at a particular frequency, spin your signal, spinning ये e ला रहा है, your signal around a circle at that frequency and average a bunch of points along the path. As simple as that. So here your xk is the amount of frequency k in the signal. So कितना proportion इस frequency का, इसका contribution कितना है. This is essentially what you're trying to find. Now there are two things which are part of that contribution. एक जिसका जिक्र पिछली वीडियो में हुआ है और एक जिसका जिक्र उसने नहीं किया तफसील से. ये अगली एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा जिसमें जिक्र आएगा. So there are two things which need a contribution from a particular frequency. For example, एक wave जो है वो let's say ये एक frequency है, ये एक दूसरी frequency है, ये एक तीसरी frequency है. So एक हमारा signal जो है वो let's say इन तीन frequencies से बन रहा है. पहला कंट्रीब्यूशन जो किसी एक फ्रीक्वेंसी का होता है वो उसका मैग्नीट्यूड का कंट्रीब्यूशन है, उसके एम्पलीट्यूड का. कितनी एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी से आ रही है, वो फ्रीक्वेंसी कितने एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो ऐड हुई भी है उस सिग्नल के अंदर. जैसे आपको याद होगा स्क्वायर वेव के केस में हम डिक्रीज करते जा रहे थे एम्पलीट्यूड, सो हायर फ्रीक्वेंसीज का कंट्रीब्यूशन कम से कम होता जा रहा था. एंड द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन वाज कमिंग फ्रॉम द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, द फंडामेंटल. ठीक है. दूसरी बात, ये तो हो गया
जिस चीज़ को हम इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये लाइन अप जब हो रही हैं तो इनके फेजेस क्या हैं, रिलेटिव फेजेस क्या हैं, यानी इन सारी फ्रीक्वेंसीज को जब आप आपस में लाइन अप कर रहे हैं तो कितने डिफरेंस के साथ कर रहे हैं, क्या फेज कोहेरेंस में कर रहे हैं, सबके सब एक साथ साइंस शुरू हो रही हैं, सबका जीरो जो है वो रीजन के ऊपर है और कॉस का जो है वो वन जो है वो रीजन के ऊपर है, या आप उनमें कुछ ना कुछ फेज डाल रहे हैं। ये दोनों चीजें ये ट्रांसफॉर्म आपको दे रहा है, बिकॉज नोटिस कि ये वाला हिस्सा कॉम्प्लेक्स है, सो देयरफॉर द आंसर दैट कम्स आउट each kth value is a complex number including both the strength, the amplitude and the phase shift of that particular frequency. So essentially this xk is x real plus j x imaginary. So the magnitude determines or the amplitude determines the relative presence of a sinusoid, एक particular sinusoid in xt. So the magnitude spectrum अगर आप draw करना चाहते हैं तो you're just going to take the magnitude of this vector and you're going to find the magnitude spectrum. ये वो है जो हम ज़्यादातर यूज़ किया करते हैं, क्योंकि हम अक्सर स्पीच प्रोसेसिंग में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते कि किस फेज़ के साथ ये आ रही हैं, तो हमारी गुफ्तगू आमतौर पे ये रहती है कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर स्पीच के अंदर। इसीलिए हमने अब तक सेमेस्टर के शुरू से कभी इसके फेज को बहुत ज़्यादा नहीं देखा, बट द फेज डिटर्मिन्स हाउ द साइनसॉइड्स लाइन अप रिलेटिव टू वन अनदर टू फॉर्म द एक्सटी. सो द फेज स्पेक्ट्रम कुड सिंपली बी फिगर्ड आउट यूजिंग दिस tan इनवर्स ऑफ द रियल कंपोनेंट एंड द इमेजिनरी कंपोनेंट, इनकी रेशो का आप इनवर्स टेंजेंट ले लेंगे तो आपको उससे इसका फेज भी मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फेज क्या था, फेज शिफ्ट कितनी थी, फाई कितना था इसका, ठीक है। All right, n is the number of samples that you have. ये essentially आगे जाकर हमारी विंडो डिटरमिन करेगा, हमारी जितनी बड़ी विंडो यानी उस सिग्नल के कितने सैंपल्स हमारे पास टोटल मौजूद हैं। Small n is the current sample under consideration, so it goes from like 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. K is the current frequency under consideration. किस फ्रीक्वेंसी के लिए आप इस पर ढूंढ रहे हैं कि इस फ्रीक्वेंसी का कंट्रीब्यूशन कितना है, so it goes from 0 to n minus 1 hertz. So you can see here clearly there are two loops. One loop is this जो कि यहाँ पर आप कर रहे हैं, the other loop is the outer loop जो कि इन केस को इटरेट करा रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी का कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, and then for each of the frequencies you essentially go to the signal and you figure out कि इस फ्रीक्वेंसी का इस सिग्नल के सारे हिस्सों में कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है। ये इसका अगर हम इसकी इंट्यूशन फर्दर आगे बढ़ाना चाहें तो ये इसकी इंट्यूशन है। The 1 over n is not necessary, जैसे अभी आप वीडियो में भी देख के आए हैं, but it gives the actual sizes of the time spikes. अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये 1 over n नहीं करेंगे तो ये आपको जो है वो एक लेंथेंड वर्जन उसका देगा, स्केल्ड वर्जन नहीं देगा, विच इज स्टिल फाइन। जब हम इसको लिखते हैं यूजुअली तो हम इसको 1 over n के बगैर लिखते हैं जब ट्रांसफॉर्म को लिख रहे होते हैं। ये अभी मैं अगली स्लाइड के अंदर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम ट्रांसफॉर्म में अभी मैं वही फॉर्मूला लिखना चाहता था जो अभी आप देख कर आए क्या, जहाँ पर एवरेज हो रही है हम इसको एवरेज के बगैर लिखते हैं यूजुअली 1 over n के बगैर। ओके, n over n is the fraction of time we have gone through the n samples, यानी हम कितना गुजर चुके हैं इसमें से। सो आपका टोटल जो विंडो का साइज n है तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं, सो स्मॉल n जहाँ तक पहुंचे हैं, n is the total size. So n over n is essentially the fraction कि आप अपने सैंपल में से कितना गुजर चुके हैं जितना आपके पास टोटल विंडो था। 2 pi k is the speed in radians per second and e raised to power minus ix is the backward moving circular path. It's like it's the backward moving circular path. आपके पास बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों सर्कुलर पैथ्स होते हैं, आप दोनों को यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए जब आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है तो वो एसेंशली एक सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्म होता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ओरिजिन। ये चीज़ भी आगे जाकर आप देखेंगे कि, और अब आपको रीजन समझ में आ जाएगी कि ये किस वजह से हो रहा है। सो देयर इज अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एंड देयर इज अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, एसेंशली द सेम सर्कल रोटेटिंग इन वन डायरेक्शन और द अदर डायरेक्शन। The last three of these essentially tell you कि अब तक आप कितना मूव कर चुके हैं अपने सर्कल के अलॉन्ग, ठीक है जनाब। तो ये हो गया इस फॉर्मूले की कुछ एक्सप्लेनेशन। होपफुली अब आपको इसके अंदर कोई चीज़ कंफ्यूजिंग नहीं होगी कि इसमें क्या बना हुआ है। This is from Khalid's website, essentially the same thing but in both directions now. So here in the first one you are converting from time domain to frequency domain, and here in the second one you're going from frequency domain to time domain. इन फॉर्मूलाज के अंदर चेंजेस आप आती हुई देखेंगे। अब जैसे कि अभी आप देख कर आए हैं कि पिछली स्लाइड के अंदर यहाँ पर हमने 1 over n भी डाला हुआ था, अब यहाँ 1 over n नहीं है। यू कैन बेसिकली पुट दैट बैक इन, और अभी आपने देखा था कि उससे सिर्फ स्केलिंग का फर्क पड़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एसेंशली नाउ दिस सेकंड वन इज कन्वर्टिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डोमेन। आप फ्रीक्वेंसी के रेसिपीज दे दें और उसे कहें कि अब इसका सिग्नल बना दो टाइम डोमेन का, और इतनी देर के लिए बना दो जितना n है, तो वो उतनी देर का उसका सिग्नल आपको बना कर दे देगा, ठीक है। ये इसकी कुछ इंट्यूशंस और भी यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन आई वोंट रीड दीज आउट फर्दर क्योंकि अब इंट्यूशन जो एक बिल्ड हो गई है आई वुड वांट कि हम उसी को आगे लेकर चलते रहें। फिलहाल बाकी सारा कुछ इस स्लाइड के अंदर सेम है।
and now you have seen basically the Fourier transform and its inverse कि किस तरह से ये वापस भी जा सकता है और किस तरह से frequency से time domain में भी लेकर जा सकता है. So now we know that given a time invariant signal हम उसको आसानी से उसकी frequency domain interpretation में convert कर सकते हैं. By the way, जो हम algorithm use करते हैं करने के लिए, that's known as the fast Fourier transform, the FFT. ये नाम आप बहुत सुनेंगे. So FFT is the algorithm. It's actually a really clever algorithm और ये इसी चैनल की वन ब्लू थ्री ब्राउन की एक वीडियो इस पर भी है जिसमें इन्होंने फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ. इट्स एन अमेजिंग एल्गोरिथम. आपको वक्त मिले तो ज़रूर पढ़ें. हम उसको अब यहाँ से आगे, क्योंकि हमें अब समझ में आ गया कि हो क्या रहा है, अब हम उसको एज अ ब्लैक बॉक्स ट्रीट करेंगे. यू गिव इट द टाइम डोमेन सिग्नल, इट गिव्स यू द फ्रीक्वेंसी डोमेन वर्जन. यू गिव इट द फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल, इट गिव्स यू द टाइम डोमेन वर्जन. तो लिहाजा यहाँ से आगे अब हम उसकी फर्दर उस एल्गोरिथम में नहीं जाएंगे. इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो एंड दैट शुड बी इनफ फॉर यू. Alright जी, so यहाँ से आगे की जो बात है वो आपको already मालूम है. So you already know about the whole theory behind why do we need to perform these short time methods. Why do we need the short time methods? Because हमारी जो original waveform है, it does not fulfill the linear time invariant conditions जिसके लिए हम ये सब कुछ बना रहे हैं. So हमारी पूरी की पूरी waveform के अंदर frequencies और उनका कंट्रीब्यूशन और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रहती. सो लिहाजा वी नीड टू बेसिकली विंडो आवर सिग्नल इनटू दीज शॉर्ट विंडोज एंड परफॉर्म अ विंडोड फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो हमें हर जगह के एतबार से पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, उससे थोड़े से इंटरवल के बाद कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, थोड़े से के बाद कौन कौन सी है. दैट इज एसेंशली व्हाट गिव्स यू योर स्पेक्ट्रोग्राम, जिसकी तरफ अब हम बिल्ड करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं. So यहाँ से आगे थ्योरी वही रहेगी. You're gonna take a window. It could be a rectangular window. It could be a Hamming window. It could be a Harmonic window. It could be it's a window, and you take a window. You slide it across your signal, and at each point, whatever is in the window, you basically take a Fourier transform of that. That gives you the frequency components in that window, and basically, if you plot them, that's your spectrogram. That's essentially what you're doing. मैं यहाँ फॉर्मूला अब दोबारा वही यूज़ करना शुरू कर रहा हूँ जो आपकी बुक डिजिटल प्रोसेसिंग और स्पीच सिग्नल्स यूज़ करती है, बिकॉज ताकि आप इसके साथ साथ वो पढ़ सकें. सिर्फ इतना मैं आपको एक दफ़ा दोहरा दूँ यहाँ पर कि आपका वो जो अभी इंट्यूशन आप लेकर आए हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की, वो ये बैठा हुआ है. सो दिस इज एसेंशली e raised to power minus j omega n is essentially minus j 2 pi के एन ओवर एन. तो ये उसी चीज़ को आपने एक्सपेंड करके इस जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको ही आपने वहाँ पर दूसरी फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ था. बट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट एज पार्ट ऑफ द कोर्स, इससे पहले हम ये चीज़ कवर कर चुके हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए वी डोंट केयर. तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दिस इज़ योर सिग्नल एंड दिस इज़ एसेंशली द फ्रीक्वेंसी जिसकी आप प्रेजेंस इसमें ढूंढ रहे हैं, द रोटेटिंग सर्कल, एंड दिस इज़ द विंडो. So if you think about it, you're taking this window and this Fourier transform जो कि आप पूरे सिग्नल का कर रहे हैं, and you're essentially convolving these two together. वही सेम इंट्यूशन. सो जो इससे पहले इंट्यूशन ली थी वही सेम इंट्यूशन. सो अब आपने कॉन्वोल्यूशन फाइंड किया है विंडो का, चाहे वो रेक्टेंगुलर विंडो है या आपकी कोई और विंडो है, उसका आपने कॉन्वोल्यूशन फाइंड किया विद द फोरियर ट्रांसफॉर्म. दिस wn minus n इज अ रियल विंडो सीक्वेंस ऑफ लेंथ m पोजिशनड एट पर्टिकुलर टाइम इंडेक्स n. बिल्कुल वही सारी की सारी थ्योरी. सो दिस इज एसेंशली अ कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू टाइम डोमेन सिग्नल्स. It's a convolution of your let me call it अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर लिखूँ और मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को इस पूरी की पूरी चीज़ को अगर मैं कह दूँ कि ये m है, so you are essentially finding a convolution of wn and mn. इनका आप convolution find कर रहे हैं यहाँ पर. And we have a very very interesting property of the convolution जो हमने इससे पहले डिस्कस नहीं की थी. वो प्रॉपर्टी क्या है वो मैं एक दफ़ा यहाँ पर उसका जिक्र कर देता हूँ क्योंकि आगे जाकर हमने उसको यूज़ करना है. अभी तक तो हमारी इंट्यूशन क्या बिल्ड हुई हुई है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी सिग्नल, यू टेक द सिग्नल, you rotate it with, you basically try to correlate it with these rotating circles and you figure out the contribution of each frequency, and the contribution includes the magnitude, and that is the proportion जो उस frequency की तरफ से आ रहा है, and also the phase कि जिस लाइनअप के अंदर जितने फेज के साथ वो वाली फ्रीक्वेंसी ऐड हुई हुई है. यहाँ तक तो याद है ना, यहाँ तक मेरे साथ है. अब हमने ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो ये पूरे का पूरा आपका जो सिग्नल है, ये टाइम डोमेन सिग्नल है, इस टाइम डोमेन सिग्नल को अगर हम विंडो कर रहे हैं, चले मैं खाली इतनी चीज़ की बात कर लेता हूँ. टाइम डोमेन सिग्नल को अगर आप विंडो कर रहे हैं
हमारे पास जो रिलेशनशिप मौजूद है वो ये है कि इफ़ वी टेक बोथ द विंडो which is w, and we take the Fourier transform of the window, which will make it w omega, and we take the Fourier transform of this second signal जो यहाँ पर है, and we take the Fourier transform, it becomes capital M of omega. Then if we just multiply these two together, this will be equivalent to finding the correlation of the convolution of these signals in time domain. In other words, if you have two signals, you have your signal x and xt and yt, and you find the convolution of these two signals, then this is equivalent to saying that take both of these signals, your x f and your y f, and you multiply it in frequency domain. So convolution in time domain is equivalent to multiplication in frequency domain. इतनी सी सिर्फ बात है. ये इसके पीछे अब intuition क्या है, अगर आप खालिद की वेबसाइट पर जाएं तो he has basically gone through the intuition of that as well. लेकिन just think about it कि यहाँ पर आप essentially जब frequency domain में चले गए हैं तो you have separated out the frequency components, and now essentially उस frequency component को जो चीज़ modify कर रही थी वो चीज़ भी अपने frequency component में आ गई है. तो सिस्टम की जो चीज़ सिग्नल की जिस चीज़ को मॉडिफाई कर रही है, एसेंशली आप उनको पॉइंट बाय पॉइंट आपस में मल्टीप्लाई करके ओवरऑल रिजल्ट ला सकते हैं, बिल्कुल जो काम आपको कॉन्वोल्यूशन दे रही थी. याद है कॉन्वोल्यूशन आपको रिस्पांस दे रही थी कि जब गले में से हमारी एक्साइटेशन की वेव फॉर्म गुजरती है हमारे वोकल ट्रैक्ट में से तो क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है. टाइम डोमेन में देखें तो दैट्स अ कॉन्वोल्यूशन, दैट्स एन अ मल्टीप्लिकेशन दैट एक्यूमुलेट्स इफेक्ट्स. इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एसेंशली आप ये कह रहे हैं ये वाली फ्रीक्वेंसी जब गले में आएगी तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, यानी क्या वो बढ़ेगी या घटेगी, एटेनुएट होगी या एम्पलीफाई होगी. दिस इज एसेंशली व्हाट यू डूइंग. मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, आई विल जस्ट कीप इट हियर कि ये रिलेशनशिप है जो हमने आगे जाकर यूज़ करना है और ये हमारे लिए कारआमद होगा. इस तरह से भी सोचना है इसके बारे में. सो कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. आप दोनों सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएं, वहां जाके मल्टीप्लाई कर दें, वापस टाइम डोमेन में लाएं तो ये कन्वॉल्व हुआ रिजल्ट आ जाएगा. एंड द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू. Multiplication in time domain is equal to convolution in frequency domain. So the other side holds as well. ठीक है, but खैर anyhow वापस आते हैं. So essentially you're finding अब आपका जो मेथड है, जब मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे शॉर्ट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल कर दें, the STFT, तो उसका तरीका क्या होगा. You will basically take a window, जो भी window आपने यूज़ करनी है, you will window out a part of the signal, and उस part of the signal को पकड़ के आप उसका Fourier transform find करेंगे और वो उतनी जगह का Fourier transform होगा जितनी जगह आपने window रखी थी. Now you're gonna move the window ahead and find the next Fourier transform and so on. इसकी बहुत हमने डिटेल में प्रैक्टिस की थी जब हम टाइम डोमेन मेथड्स कर रहे थे. ऑल राइट. अब जाहिर है कि जब विंडो कर रहे हैं तो विंडो के कोई ना कोई इम्पैक्ट भी आएगा, उसकी टाइप का भी इम्पैक्ट आएगा, उसके साइज़ का भी इम्पैक्ट आएगा, और ये हमारे आज के लेक्चर का दूसरा और बेसिकली आखिरी मौजू है जिसको हमने समझना है. सो द टू विंडोज़ दैट वी लुक्ड एट, ये बेसिकली एक टाइम डोमेन सिग्नल है जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बना हुआ नज़र आ रहा है, और पहले के अंदर ये हैमिंग विंडो के साथ जो है इसको विंडो किया गया है. आप देख सकते हैं क्लियरली टेपर इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है, जबकि दूसरे केस के अंदर ये एक रेक्टेंगुलर विंडो के ज़रिए जो है ये इसको फिल्टर किया गया है, इसको निकाला गया. सो ये आपके पास निकल आया. अब इसका आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है. एंड नाउ वी वांट टू सी कि क्या विंडो का इस पर कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या. ऑल राइट, व्हाट यू आर लुकिंग एट हियर इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जस्ट द विंडोज. खाली एक हैमिंग विंडो और उसी लेंथ की रेक्टेंगुलर विंडो का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया. भाई इसकी क्या जरूरत है. अभी जो रिलेशनशिप आप देख कर आए हैं कि we know that multiplication in frequency domain is equivalent to convolution in time domain, उस रिलेशनशिप से एक बात हमें और भी समझ में आती है. एक तो तरीका ऑब्वियसली ये है कि you take a signal, you window it out and you find the Fourier transform. Yes, it's going to give you the result. The other way of doing the same is because क्योंकि आप यहाँ पर convolution कर रहे थे ये वाला काम करने में विंडो के साथ, आप ऐसा भी कर सकते थे कि खाली विंडो का Fourier transform फाइंड कर लें और उस चीज का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लें जिसको आप विंडो करने लगे, एंड देन मल्टीप्लाई द टू टुगेदर, द टू फोरियर ट्रांसफॉर्म्स टुगेदर, एंड यू गोना गेट द सेम रिजल्ट. तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या चीज देख रहे हैं, यहाँ हम फोरियर ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं खाली विंडोज का. सो दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म of a rectangular window, and this is the Fourier transform of the same length Gaussian window or the Hamming window.
नॉट completely right if I call it a Gaussian window. वो साइड पे आपको याद होगा थोड़ा सा हम उसमें टेपर भी जो स्ट्रेट लाइन भी रखते हैं उसको कट ऑफ एजेस रखते हैं उसके अंदर। अच्छा खैर एनी हाउ, तो यहाँ पर दो डिफरेंसेस नोट कीजिए। एक विड्थ ऑफ द मेन लोब, इस और इसको हमने डिस्कस किया था जब पिछली दफ़ा हम इस चीज़ को पढ़ रहे थे। विड्थ ऑफ द मेन लोब इज almost twice in case of the Hamming window compared to the rectangular window of the same size. तो ये जो पास बैंड जिसकी हमने वहाँ पर बात की थी ये बड़ा होता है आपकी हैमिंग विंडो का। और दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पर देखी थी वो ये थी कि जो एटेन्यूएशन आउटसाइड द पास बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इन द हैमिंग विंडो compared to your compared to the rectangular window. So दो बातें हमने यहाँ पर नोट करनी है। एक बात तो ये नोट कर ली, ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप, और दूसरी चीज़ हमने ये नोट कर ली कि हमारा जो है वो आउटसाइड द पास बैंड कितनी ज़्यादा एटेन्यूएशन कर रही है हमारी हैमिंग विंडो, जो कि नहीं कर रही रेक्टेंगुलर विंडो। लेकिन अब इस बात को थोड़ा सा मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि विंडो का जो इम्पैक्ट आ रहा है। अभी हम विंडो को दोनों तरह से यूज़ करेंगे, एक तो जो मैंने एल्गोरिथम अभी बताया जो आप इंप्लीमेंट करेंगे, और दूसरा फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी हम जाकर देखेंगे कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन कि मैं इस विंडो को उठाकर एक पोजीशन पे या दूसरी पोजीशन के ऊपर प्लेस कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं इसे, व्हाट डज दैट इवन मीन। All right, so here is now the Fourier transform of the signal जो अभी आप स्पीच का सिग्नल देख कर आए थे। ये उस स्पीच सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जबकि उसको हमने यहाँ ऊपर वाले में आपको नज़र आ रही है हैमिंग विंडो और नीचे वाले में नज़र आ रही है रेक्टेंगुलर विंडो। अब ज़रा इस ट्रांसफॉर्म को देखते हैं कि इसमें हमें नज़र क्या कुछ आ रहा है। ये बात हम इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज ज़रा आप इसको तफसील में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ओवरऑल अगर आप शेप में देखें तो ये वाली चीज़ नज़र आ रही है, ये दोनों में नज़र आ रही है आपको। ये जो इसका एनवेलप है, essentially this envelope is showing you the formants. So you see the first formant here around 300 to 400 hertz. You see the second and third formant combined here around 2200 hertz, and then you see the fourth formant around 3800 hertz. So तीनों formants आपको यहाँ so आपको चार formants इसमें नजर आ रहे हैं। और एक बात ये नोट करें कि आपका सेकंड और थर्ड फॉर्मेट एक दूसरे के बहुत करीब है। सो अगर मैं आपसे इस पॉइंट पे ये पूछूंगी वॉवल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से वॉवल्स होते हैं जिनके अंदर सेकंड और थर्ड फॉर्मेट एक दूसरे के करीब आए हुए होते हैं, और वो कौन से होते हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के करीब होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको ये बात मालूम है। अच्छा जनाब, मैं पूछता नहीं आपसे, लेकिन खुद ज़रा पॉज करके सोचना चाहें तो इस पर सोच लें। दूसरी चीज़ जो आपको इन ग्राफ्स के अंदर नज़र आ रही है, इन स्पेक्ट्रा के अंदर नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि यू कैन सी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्लॉटिस हियर। So this is your fundamental frequency, and this is the second harmonic, and this is the third harmonic, and so on and so forth. So you see the harmonics here as well, the fundamental frequency and its integral multiples, वो भी आपको नजर आ रहे हैं इसी ग्राफ में। So the envelope of this graph is essentially the vocal tract resonances, and the sharp moving peaks in the graph are essentially the vocal fold फोनेशन। तो आपको यहाँ सोर्स भी नज़र आ रहा है और फिल्टर भी नज़र आ रहा है, ये दोनों चीज़ें इसमें ऑब्जर्व कर लें। एक बात और ऑब्जर्व करें कि आपका जो रेक्टेंगुलर विंडो का स्पेक्ट्रम है नीचे वाला, ये ज़्यादा नॉइजी है एज कंपेयर टू द स्पेक्ट्रम ऑफ द हैमिंग विंडो। और ये ज़रा गौर कीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज आपको नज़र आ रही हैं, इट्स डेंस, इट हैज़ मोर फ्रीक्वेंसीज, एंड वी सॉ अ रीज़न एट दैट पॉइंट जब हमने पहली मरतबा इसकी बात की थी। अब उस रीज़न को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया, क्योंकि अब आप उस रीज़न को समझ सकते हैं। ऑल राइट, सो द विंडो टाइप जो उसके इम्पैक्ट हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, एक तो ये है कि दी pitch harmonics are sharper in the rectangular window. Clearly everything was sharper in the rectangular window relatively, due to the greater frequency resolution of the rectangular window as compared of the same length Hamming window. ठीक है, क्योंकि क्यों frequency resolution हम किस चीज़ को कह रहे हैं, ये मैं अभी जाकर और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। लेकिन सिंपली इसका मतलब ये है कि जो आपका सेंट्रल लोब है वो इसका पतला है, सो इट कैन बेसिकली फिगर आउट वेरी क्लियरली कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं विदाउट स्मीयरिंग देम अप। ये बात अभी अगर नहीं भी समझ आई तो डोंट वरी, इसके ऊपर तो पूरी वीडियो आपको दिखानी है। दिस इज नोन एज द हार्मोनिक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसकी अभी हम बात करते हैं। अच्छा जनाब, दूसरी बात जो अभी आप समझने के काबिल हैं वो ये है कि द रेक्टेंगुलर विंडो प्रोड्यूसेस अ नॉइजियर स्पेक्ट्रम। अब इस चीज़ की क्या रीज़न है? इस चीज़ की रीज़न ये है, और ये बात मैंने उस वक्त भी की थी जब हम पहले पढ़ रहे थे। Let me just basically make these two windows, and let me make a signal here. So a very pure signal, or a purish signal at least. इस सिग्नल को जिस वक्त मैं
विंडो करके लाऊंगा इन दोनों में से, सो लेट्स से मैं यहाँ पर भी इसको, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ द सेम, and now if I remove the windows, this is essentially the signal that I'm getting. And what I want you to notice is essentially these edges, जो कि बहुत छोटे हैं हैमिंग विंडो के केस में, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। इन एजेस से क्या होगा, अब ज़रा थ्योरी में वापस जाएं, अब आपको समझ में आएगा मैं आपको इतनी लंबी लंबी वीडियोस क्यों दिखा रहा था। जब ये सिग्नल रैप अराउंड होगा किसी एक फ्रीक्वेंसी के इन द फोरियर ट्रांसफॉर्म, it will basically try to recreate these edges. The signal that it's trying to recreate is essentially this. और ये एज बनाने के लिए आपको मालूम है कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आर्म की जरूरत होगी जो इस एज को ड्रॉ कर सके। सो देयरफॉर ये इम्पल्स जो फॉल्सली जनरेट हो गया, बन गया हमारे सिग्नल के अंदर दोनों एजेस के ऊपर, ये शार्प जो ड्रॉप्स बन गई, इनको बनाने के लिए ढेर सारी और फ्रीक्वेंसीज लानी पड़ेंगी रीड्रॉ करने के लिए। जबकि in the other window, in the Hamming window, you don't have these sharp edges. So therefore वहाँ पर noisiness कम होगी, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज कम लानी पड़ेंगी ट्रांसफॉर्म को इसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। So therefore although कि हमारी रेक्टेंगुलर विंडो की जो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा होती है, और ये बात अभी हम देखेंगे क्यों होती है, but due to noisiness the rectangular window is rarely used in frequency domain analysis. हम इसको यूज़ करते हैं तो टाइम डोमेन में करते हैं, वहाँ हमने देखा था कि ये रेक्टेंगुलर विंडो अच्छी होती है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इसको आमतौर पे यूज़ नहीं करते, वी यूज़ हैमिंग विंडो और हैनिंग विंडो और सम अदर विंडो which has a taper to it. All right, so our next big question is about the impact of the window size on the actual transform. And this is an important concept, और इसके लिए मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, and this is what is known as the harmonic uncertainty principle, which is interestingly also related to the Heisenberg uncertainty principle, and the video that I'm going to show you basically also connects the dots in the remaining half जो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। I'll just show you the half जहाँ तक वो harmonics की बात कर रहा है, उससे आगे की चीज़ में if you're interested I would highly encourage you to watch it on your own. लेकिन the idea is fairly simple and straightforward. तो पहले उसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझ के फिर उस वीडियो पर जाते हैं ताकि आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। ये हमारा एक सिग्नल है, लेट्स से एक स्पीच सिग्नल है, और हम इसके ऊपर विंडोइंग करके उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं। नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, या तो हम एक बड़ी विंडो बनाएं, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम एक छोटी विंडो बनाएं। एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है वो ये है, और मैं यहाँ रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ बट यू कैन एज्यूम कि हम हैमिंग विंडो या कोई भी विंडो बना सकते हैं। नाउ एक चीज़ तो ये बड़ी क्लियर है कि हमारी विंडो अगर छोटी होगी, दैट मीन्स कि वी गोना गेट मोर टेम्पररी रेजोल्यूशन। हमें बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में जितनी चेंजेस आ रही हैं, बिकॉज इट्स अ टाइम वेरिंग सिग्नल, राइट, वी नो इट्स नॉट अ टाइम इनवेरिएंट सिग्नल, तो हम बहुत हाई प्रिसिजन के साथ बता सकते हैं, टाइम के बारे में बहुत प्रिसाइसली बता सकते हैं कि सिग्नल के अंदर उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या चेंजेस आ रही थी। सो वी कैन बी वेरी श्योर ऑफ द टाइम। हम देखेंगे जो चीज़ हमारे लिए असल में मसला बनेगी, जिसको अभी हम समझने लगे, कि व्हेन वी आर वेरी श्योर ऑफ द टाइम, like with a narrow time window, we become less and less precise about the frequencies present in there. So if you want to know the time, if you want to improve the time resolution, the frequency resolution goes down. If on the other hand you use a wider window, you see a wider picture of the signal, your time resolution becomes worse, your time resolution goes down, but with that your frequency resolution becomes better. अब ज़्यादा प्रिसाइसली फ़र्क कर सकते हैं दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज बिकम्स मोर अपेरेंट, आप ज़्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं। अब टाइम वाली बात तो समझना बड़ी आसान है, छोटी विंडो है तो यू आर मोर प्रिसाइज अबाउट द टाइम, बड़ी विंडो है तो यू आर लेस प्रिसाइज अबाउट द टाइम। इतने में तो आई होप कि कोई मसला नहीं होगा। मसला ये है कि अब छोटी विंडो होने का ये कैसे मतलब है कि आप फ्रीक्वेंसीज के बारे में लेस प्रिसाइज हो गए। इसकी एक मिसाल मुझे बड़ी अच्छी इस फोरम के ऊपर डिस्कशन में किसी ने पोस्ट की थी, आई रियली लव्ड इट, और आगे वीडियो के अंदर भी इस तरह की चीज़ पे वो बिल्ड करेगा। बट एनी हाउ, हियर इज़ द कोड विच हैज़ बेसिकली जनरेटेड दीज फिगर्स ऑन द राइट। लेकिन मैं ये फिगर्स के बारे में जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये है, आपको सबसे ऊपर नजर आ रही है अ विंडो ऑफ साइज 100 सैंपल्स। 100 सैंपल की विंडो है, दो सिग्नल प्लॉट हुए हैं, उन दो सिग्नल्स के बीच में बहुत कम डिफरेंस है। सो एक की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.05 हर्ट्ज है, दूसरे की 0.0501 हर्ट्ज है, राइट।
और आप देख सकते हैं कि ये कोई दोनों पूरी तरह ओवरलैपिंग ही लग रहे हैं एक्सेप्ट फॉर कि इसके आखिर के करीब में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है। इट्स अ शॉर्ट विंडो, आपको इतने ही नज़र आएगी दोनों सिग्नल, और इस पॉइंट पर कोई इस विंडो को देखकर बड़े आराम से इन सिग्नल्स को एक फ्रीक्वेंसी का कह सकता है। Next, what he does is he goes ahead and he plots these two signals for 5,000 samples and then zooms in on the last 100 samples. And here you can clearly see that the red and the blue are clearly distinguished from each other. ये क्या हुआ? आइडिया सिर्फ इतना है कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब आप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन इन दोनों के बीच में देख रहे हों तो आपको डिफरेंस वहाँ नज़र भी आ जाए। हो सकता है कि आपकी शॉर्ट विंडो में आपको फ़र्क नज़र ना आए। जैसे मिसाल के तौर पर अभी इस अगली वीडियो के अंदर एक मिसाल दी जाएगी कि दो गाड़ियों की लाइटें ब्लिंक कर रही हैं और आपको बहुत थोड़ी टाइम के लिए आप देखते हैं दोनों ऑन हुई और लेट से ऑफ हो रही हैं, आप कहेंगे ये तो इन सिंक ब्लिंक कर रही हैं, लेकिन हो सकता है अगले ही साइकिल के अंदर वो उनका जो है वो सिंक ख़राब हो जाए। जबकि अगर आप बहुत देर तक देखें, मैं 1 घंटे से खड़ा गाड़ियों की लाइटों की देख रहा हूँ, ऑल्दो आई होप कि आपकी ज़िंदगी में और काम भी हैं करने के, पर आप घंटे भर खड़े हो कि दो गाड़ियों की ब्लिंकिंग लाइट्स को देखते रहे और घंटे तक वो इन सिंक ब्लिंक करती रहे, नाउ यू आर मोर श्योर कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। So surety about a particular frequency and surety about the ability to distinguish two frequencies depends on the amount of time you are given to observe those two frequencies and their cycles happening. With this hand wavy sort of explanation, I hope कि कुछ आपके जहन में अब आइडिया आना शुरू हो गया कि क्या रिलेशन होगा। ये बहुत प्रिसाइज होगा अगली वीडियो में, जिसके अंदर वो एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से जो आपका जो रोटेट करवाने वाला काम था, ऑफ द सिग्नल को रोटेट आप करके रैप अराउंड कर देते थे अराउंड ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उसमें किस तरह से ये वाली विंडो की लेंथ जो है ये असरअंदाज हो रही है। बाय द वे यहाँ पर 5000 सैंपल कहाँ से आए हैं? इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.0501, तो वो डिफरेंस आता है 0.0002 पाई रेडियंस पर सैंपल। तो 5000 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बिल्कुल पाई रेडियन अपार्ट हो जाते हैं, यानी आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये बनाने के पीछे इसके ये थ्योरी है। सो लेट्स वॉच द वीडियो एंड लेट्स कम बैक फॉर द फाइनल पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जिसके अंदर अब हम इस सब कुछ का इम्पैक्ट देखेंगे जो हमारे काम के ऊपर होगा। You've probably heard of the Heisenberg uncertainty principle from quantum mechanics, that the more you know about a particle's position, the less certain you can be of its momentum, and vice versa. My goal here is for you to come away from this video feeling like this is utterly reasonable. It'll take some time, but I think you'll agree that digging deep is well worth it. You see, the uncertainty principle is actually one specific example of a much more general trade-off that shows up in a lot of everyday, totally non-quantum circumstances involving waves. The plan here is to see what this means in the context of sound waves, which should feel reasonable, and then Doppler radar, which should again feel reasonable and a little bit closer to the quantum case. And then for particles, which, if you're willing to accept one or two premises of quantum mechanics, hopefully feels just as reasonable as the first two. The core idea here has to do with the interplay between frequency and duration. And I bet you already have an intuitive idea of this principle before we even get into the math or the quantum. If you were to pull up behind a car at a red light, and your turn signals were flashing together for a few seconds, you might kind of think that they have the same frequency, but at that point, for all you know, they could fall out of sync as more time passes, revealing that they actually had different frequencies. So an observation over a short period of time gave you low confidence over what their frequencies are. But if you were to sit at that red light for a full minute, and the signals continued to click in sync, you would be a lot more confident that the frequencies are actually the same. So that certainty about the frequency information required an observation spread out over time. And this trade-off right here between how short your observation can be and how confident you can feel about the frequency is an example of the general uncertainty principle. Similarly, think of a musical note. The shorter it lasts in time, the less certain you can be about what its exact frequency is. In the extreme, I could ask you what the pitch of a clap or a shockwave is, and even someone with perfect pitch would be unable to answer. And on the flip side, a more definite frequency requires a longer duration signal. Or rather than talking about definiteness or certainty, it would be a little more accurate here to say that the short signal correlates highly with a wider range of frequency, and that the signal correlating strongly with only a narrow range of frequencies must last for a longer time. Here, that's the kind of phrase that's made a little bit clearer when we bring in the actual math.
So let's turn now to talking about the Fourier transform, which is the relevant construct for analyzing frequencies. The last video I put out was a visual intuition for this transform, and yes, it probably would be helpful if you've seen it, but I'm going to go ahead and give a quick recap here just to remind ourselves of how it went. Let's say you have a signal and it plays 5 beats per second over the course of 2 seconds. The Fourier transform gives a way to view any signal not in terms of the intensity at each point in time, but instead in terms of the strength of various frequencies within it. The main idea was to take this signal and to kind of wind it around a circle. As in, imagine some rotating vector whose length is determined by the height of the graph at each point in time. Right now, this little vector is rotating at 0.3 cycles per second. That's the frequency with which we're winding the graph around the circle. And for most frequencies, the signal is kind of just averaged out over the circle. This was the fun part of last video, don't you think? Just seeing the different patterns that come up as you wind a pure cosine around a circle like this. But the key point is what happens when that winding frequency matches the signal frequency, in this case 5 cycles per second. As our little vector is rotating around and it draws, all of the peaks line up on one side and all of the valleys on another side. So the whole weight of the graph is kind of off-center, so to speak. And the idea behind the Fourier transform is that if you follow the center of mass of the wound-up graph with frequency f, the position of that center of mass encodes the strength of that frequency in the original signal. The distance between that center of mass and the origin captures the strength of that frequency. And this is something I didn't really talk about in the main video, but the angle of that center of mass off the horizontal corresponds to the phase of the given frequency. Now, one way to think of this whole winding mechanism is that it's a way to measure how well your signal correlates with a given pure frequency. So remember, when we say the Fourier transform, we're referring to this new function whose input is that winding frequency, and whose output is the center of mass, thought of as a complex number. Or more technically, it's a certain multiple of that center of mass, but whatever, the overall shape remains the same. And the graph that I'm drawing is just going to be the x-coordinate of that center of mass, the real part of its output. If you wanted, you could also plot the distance between the center of mass and the origin, and maybe that better conveys how strongly each possible frequency correlates with the signal. The downside is that you lose some of the nice linearity properties that I talked about last video. Anyway, point is, this spike you're looking at here, above the winding frequency of 5, is the Fourier transform's way of telling us that the dominant frequency of the signal is 5 beats per second. And equally importantly, the fact that it's a little bit spread out around that 5 is an indication that pure sine waves near 5 beats per second also correlate pretty well with the signal. And that last idea is key for the uncertainty principle. What I want you to do is think about how this spread changes as the signal persists longer or shorter over time. You've already seen this at an intuitive level. All we're doing right now is just illustrating it in the language of Fourier transforms. If the signal persists over a long period of time, then when the winding frequency is even slightly different from 5, the signal goes on long enough to wrap itself around the circle and balance out. So looking at the Fourier plot over here, that corresponds to a super sharp drop-off in the magnitude of the transform as your frequency shifts away from that 5 beats per second. On the other hand, if your signal was really localized to a short period of time, then as you adjust the frequency away from 5 beats per second, the signal doesn't really have as much time to balance itself out around the circle. You have to change the winding frequency to be meaningfully different from 5 before that signal starts to balance out again. Over on the frequency plot, that corresponds to a much broader peak around the 5 beats per second. And that's the uncertainty principle, just phrased a little bit more mathematically. A signal concentrated in time must have a spread out Fourier transform, meaning it correlates with a wide range of frequencies, and a signal with a concentrated Fourier transform has to be spread out in time. Alright, so now you have the required background. Now you understand everything, hopefully.
तो अब हम यहाँ से आगे सिर्फ इस चीज़ को अब मुकम्मल कर लेते हैं और उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो यू सी हियर अ विंडो, ये on the left that on the right that you see the window which is a short window of 50 samples. On the left you see a bigger window which is a window of 500 samples. और आप इन दोनों के जब स्पेक्ट्रम को कंपेयर करेंगे तो यू कैन सी हियर कि इन केस ऑफ द नैरो विंडो यू सी अ वेरी स्मूथ स्पेक्ट्रम. और ये वो स्पेक्ट्रम है जिस तरह का हम नॉर्मली अपने फॉर्मेट्स देखने के लिए स्पेक्ट्रम बनाया करते हैं, राइट? और दूसरी साइड के ऊपर यू सी योर वाइड विंडो, and as a result the spectrum is very jagged, so you see here the fundamental frequency and you see all the harmonics and everything. So अब ये दोनों मकसद अलग अलग हमें समझ में आ गए. ये बात हम पहले भी कर चुके थे लेकिन अब हमें करना आ गई कि विंडो अगर शॉर्ट रखेंगे तो हमारे फॉर्मेट्स रिवील होने लगेंगे लेकिन हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके मल्टीपल्स जो हैं वो गायब हो जाएंगे. जबकि अगर हम विंडो बड़ी कर देंगे, विंडो वाइड कर देंगे, तो अब फॉर्मेट्स छुपना शुरू हो जाएंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी वो रैपिडली मूविंग कंपोनेंट्स जो कि आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके मल्टीपल्स हैं. ठीक है. सो इन द 50 सैंपल विंडो ओनली द ब्रॉड पीक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट थ्री फॉर्मेट्स अपीयर. The low frequency pitch and its harmonics do not resolve, you can clearly see, as no more than a single pitch period is covered by the time window. So ये भी इसका एक एंगल है इस चीज़ को सोचने का कि आप जो पूरी चीज़ इसमें 50 सैंपल्स के अंदर कवर कर रहे हैं वो एक पिच पीरियड से ज़्यादा भी नहीं है जिसको आप यहाँ पे कवर कर रहे हो. सो वाइल एज 500 सैंपल विंडो गिव्स अ मोर प्रिसाइज हार्मोनिक इंफॉर्मेशन जो कि आप यहाँ देख सकते हैं. So because the formats are changing across the 50 millisecond interval, therefore the short time analysis is preferred. So formats के केस में जब हम इस तरफ आ जाते हैं, जब हम वाइड विंडो आ जाते हैं तो मसला ये होता है कि अब वो विंडो इतनी बड़ी है कि दूसरा मसला भी होने लगा कि एक तो रिजॉल्व नहीं हो रहे, दूसरा वो चेंज भी हो रहे हैं. लिहाजा हम प्रेफर भी यही करते हैं कि फॉर्मेट्स रिजॉल्व करने के लिए हम छोटी विंडो यूज़ करें. सो विंडो 5 मिलीसेकंड ड्यूरेशन प्लेस्ड एट द बिगिनिंग एंड स्टार्ट ऑफ द 50 मिलीसेकंड इंटरवल प्रोड्यूस वेरी डिफरेंट स्पेक्ट्रा. यानी अगर आप जो है वो इस विंडो के यहाँ पर और यहाँ पर दो विंडोज बनाकर देखें तो आपको बड़े अलग अलग स्पेक्ट्रा नजर आएंगे. सो देयरफॉर वी प्रेफर, जब हमारा मकसद होता है फॉर्मेट्स को देखने का, वी प्रेफर a shorter window and that's what we use. So thus a good temporal resolution requires a short window while a good frequency resolution requires a long window. ठीक है जी. good frequency resolution, good temporal resolution. तो ये चीज़, ये जो ट्रेड ऑफ है ये आपके जहन में क्लियर रहना चाहिए. अच्छा जनाब, अब इसी चीज़ को जस्ट टू कंक्लूड और कंप्लीट एक और अंदाज से इसको देखना ज़रूरी है. जो हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया था कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन एंड मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन का, उस एंगल को भी देख लें क्योंकि आगे जाकर ये काम आ सकता है. So in order to understand the effect of window size on the spectrum of the signal, let's take the example of this signal. इस सिग्नल को हमने दो component frequency से बनाया, 800 Hz और 1200 Hz. ये दो frequencies use करके we just created this signal. So if we take just the Fourier transform of this signal, the whole signal minus infinity to positive infinity, it comes out like this. You just have two sharp peaks, one at 800 Hz and the other at 1200 Hz for an infinite time, यानी obviously a periodic signal. However, जब आप इसकी विंडोइंग करेंगे तो कुछ और होगा और उसको अब जरा देख लेते हैं. So ये हमारी एक विंडो है जिसकी लेंथ n है. ठीक है. अब हम खाली इस रेक्टेंगुलर विंडो का ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं जो हम पहले भी देख कर आए थे. So this is the Fourier transform of this window and you can clearly see कि जो first zero occur कर रहा है ये fs over n के ऊपर occur कर रहा है. This is actually a property कि Fourier transform of a window of length n, rectangular window of length n का जो first zero occur करेगा वो sampling frequency divided by n के ऊपर करेगा. यानी इसकी जो width of the main lobe होगी वो भी आप यहाँ से determine कर सकते हैं, इसकी bandwidth वहाँ से determine कर सकते हैं pass band की. So the width of the main lobe determines the pass band, the frequency is allowed to pass. The first zero occurs at f is equal to fs over n, where fs is the sampling frequency and n is the length of the window. Therefore, keeping fs constant रहेगा एक particular case के अंदर जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, your f is inversely proportional to n. तो ये वही वाली बात है जिसको अभी हम देख कर आए हैं, which means that large time windows produce a narrow band spectrum and small time windows produce a wide band spectrum. ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई. यानी जो आपकी लार्ज, जितनी विंडो लार्ज करते चले जाएंगे उतना आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये जो सेंट्रल लोब है ना ये पतले से पतला होता चला जाएगा. अब इसकी रिपरकशन क्या है वो अभी देखते हैं.
और जितनी आपकी विंडो जो है वो स्मॉल होती चली जाएगी, आपका जो सेंट्रल लोब है वो बड़े से बड़ा होता चला जाएगा जो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, ठीक है। सो ये टाइम की विंडो है और ये आपका बैंड है, जो ये साइड लोब्स हैं और ये आपका सेंट्रल लोब है। एंड दिस सिमिलरली ये टाइम की विंडो स्मॉल विंडो है और ये आपके बैंड्स हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। सो द बैंडविड्थ ऑफ द विंडो इज गिवन एज बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 इंटू एफ एस ओवर एन, ठीक है। ये चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। So here the windowed Fourier transform could be expressed as, अब ये वही वाली बात हो रही है कि हम इसको कन्वॉल्व कर रहे थे टाइम डोमेन के अंदर, वी कैन इंटरप्रेट दैट एज मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी, जो फ्रीक्वेंसी उसमें मौजूद थी f1 और f2 800 और 1200 हर्ट्ज, जब ये चीज़ फ्रीक्वेंसी डोमेन में चली गई, यानी दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इन्फिनिट टाइम सिग्नल, पूरे का पूरा सिग्नल, and now you're multiplying it in frequency domain with the Fourier transform of the window. So essentially क्या करेगा, ये विंडो के इस लोब को उठाकर यहाँ रख देगा, क्योंकि बाकी तो पूरे का पूरा सिग्नल जीरो है, सिर्फ एक जगह इस जगह पर ये इस लोब को प्लेस कर देगा। सिमिलरली फॉर द अदर फ्रीक्वेंसी वो लोब को यहाँ पर प्लेस कर देगा। सो essentially ये दो ही फ्रीक्वेंसीज थी, उन्हीं दो जगहों के ऊपर इसने अपने लोब को प्लेस कर दिया। ये हुआ है जब हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर इंटरप्रेट करें कि क्या चीज़ हो रही है। So here you have it. F1 is equal to 800 Hz, F2 is equal to 1200 Hz. ये आपके पास शॉर्ट टाइम जिस वक्त आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे विद अ नैरो बैंड विंडो, यानी आपने वाइड टाइम विंडो यहाँ पर यूज़ की है। तो वाइड टाइम विंडो यानी नैरो बैंड विंडो यूज़ करते हुए ये विड्थ जो इसकी है विंडो की, ये भी आपके पास यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। इस विड्थ के साथ जब आपने विंडो यूज़ की तो यू कैन क्लियरली सी कि ये एक लोब आ गया, एक पीक आ गई आपके पास 800 हर्ट्ज पे, दूसरी पीक आ गई आपके पास 1200 हर्ट्ज पे। एंड व्हेन दीज टू सम टुगेदर, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन के बाद जब ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में ऐड टुगेदर होंगी, तो ऐड होने के बाद ये आपके पास स्पेक्ट्रम निकल आएगा, जहाँ पे यू कैन क्लियरली सी द टू फ्रीक्वेंसीज। यही बात आपने अभी उस वीडियो के अंदर भी देखी थी, वन ब्लू थ्री ब्राउन वाली वीडियो के अंदर, जहाँ पर यही चीज़ एक्सप्लेन की गई थी इन टर्म्स ऑफ जो आपका कितनी देर तक आपका फॉर हाउ मेनी फ्रीक्वेंसीज आप मीन से दूर रहते हैं। तो ये वो जिस अंदाज से वहां पे एक्सप्लेन की थी, उस चीज़ को एक समझने का दूसरा अंदाज ये भी है। And here you can see that now you're using a shorter window, and for this window size, now you're basically again multiplying this window with both of the two peaks जो आपके पास almost like impulse like peaks थी in frequency domain, because वो आपने Fourier transform लिया था infinite time signal का, उससे आपके पास ये दोनों आई, but now when you add them together it results in one big peak rather than two peaks. तो वो जो आपके पास resolution थी frequencies की वो ख़त्म हो गई। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये कहूँ कि जब मेरे पास वाइड टाइम विंडो होती है, तो जिस ब्रश से मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ड्रॉ करता हूँ वो ब्रश बहुत बारीक और प्रिसाइज होता है। जब मेरे पास नैरो टाइम विंडो होती है, तो जिस ब्रश से मैं अपना स्पेक्ट्रम ड्रॉ करता हूँ वो बहुत वाइड और मोटा सा होता है। वो बहुत मोटी मोटी चीज़ें रिजॉल्व कर सकता है, करीब की चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर सकता। इट्स अ लेस प्रिसाइज ब्रश। So if we want to be able to distinguish two frequencies f1 and f2, then for a rectangular window, this relationship must hold. f2 minus f1 absolute is greater than or equal to 2 into fs over n. That is, the two frequencies are distinguishable only if they are at least one bandwidth apart. और ये चीज़ आपको समझ आती है। Now this, for this diagram, it's exactly one bandwidth apart. इन दोनों के बीच में फ़र्क exactly एक bandwidth का, and you can see that they are just distinguishable. अगर इससे थोड़ा सा भी करीब होती तो ये आपस में join होना शुरू हो जाती। तो ये इस चीज़ को देखने का एक दूसरा अंदाज है। फ्रीक्वेंसी डोमेन की इंटरप्रिटेशन है, पहली ज़्यादा इंट्यूटिव थी और उसका एक हिस्सा मैथमेटिकल था। ये वाली जो इंटरप्रिटेशन है ये भी होपफुली इट इज़ आल्सो इंट्यूटिव एंड मैथमेटिकल फॉर यू, बट दिस इज़ फ्रॉम लुकिंग एट इट फ्रॉम द लेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। सो इस सब कुछ का जो कंक्लूजन निकला, अगर उसको सम अप करें, तो वो ये है कि व्हेन यू हैव अ वाइड टाइम विंडो, you get a narrow bandwidth in your in the capability of the Fourier transform's resolution, and you get a more precise, more jagged spectrum, जहाँ frequencies करीब करीब की भी एक दूसरे से अलग हुई हुई होती हैं। And when you have a narrow time window, you get wider bandwidth and you get less precise and smoother spectrum. ठीक है? All right. सो नाउ अगर हम इन दोनों चीज़ों को स्पेक्ट्रोग्राम की टर्म में देखें, तो आपका वाइड विंडो यानी वाइड टाइम विंडो जो कि नैरो बैंड स्पेक्ट्रोग्राम प्रोड्यूस करती है, इट्स गुड फॉर एक्सट्रैक्टिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड द हार्मोनिक्स। तो ये इस किस्म का कुछ आपका स्पेक्ट्रम आता है, और जब स्पेक्ट्रोग्राम में अभी इसको हम देखते हैं, वेयर एज अ नैरो विंडो विच इज़ अ वाइड बैंड स्पेक्ट्रोग्राम इज यूजफुल फॉर एक्सट्रैक्टिंग फॉर्मेट्स।
ये बात याद रहे, ये आपकी असाइनमेंट में भी काम आएगी. All right, so spectrogram हम already जानते हैं is a two-dimensional representation of the time-dependent spectrum in which the vertical dimension represents frequency and the horizontal dimension represents time and the darkness represents the magnitude of that particular frequency. ठीक है, ये time domain plot है और साथ ही आपके पास time frequency domain spectrogram है. ये आपकी वाइड और नैरो बैंड की डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ गई. सो वाइड बैंड स्पेक्ट्रोग्राम रिप्रेजेंट्स गुड टेम्पोरल रेजोल्यूशन. ये आप देख सकते हैं कि ये टाइम वाइज बहुत अच्छी रेजोल्यूशन इंडिकेट करेगा. And poor frequency resolution, whereas narrow band spectrogram represents good frequency and poor temporal resolution. So narrow time window, for example wide band, showing good temporal resolution and bad frequency resolution यहाँ पर. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी frequency resolution बहुत अच्छी होगी लेकिन time में आप बहुत बड़ी बड़ी window लेकर चल रहे हैं. In this case non overlapping windows. Here you basically see it in terms जिसमें हम इससे पहले इसके साथ खेलते रहे हैं. ये आपके पास narrow time window की वजह से आया है and you can clearly see कि इसके अंदर वो पहली बात एक जो इसमें फ़र्क आप देखें वो इन लाइंस का आपस में डिफरेंस देखें कितनी करीब हैं ये एक दूसरे से. These lines are basically each for one window. So हर विंडो अपना एक पूरा प्लॉट यहाँ पे बना रही है ना, तो ये लाइंस कितने करीब हैं. Whereas यहाँ पर these are fairly big and it's not very obvious कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं. So these are the big windows जिसके ऊपर ये पूरी चीज़ बन रही है. लेकिन दूसरी चीज़ ये देखें कि यहाँ पर ये बड़े बड़े blobs बन रहे हैं, smooth ones. Whereas here you see these lines. And these lines basically correspond, और ये हम किसी ज़माने में शुरू में जब कोर्स के थे तो हम इसको कैलकुलेट भी कर चुके हैं. This is your fundamental frequency, this is the first integral multiple, this is the second integral multiple, this is the third integral multiple and so on. So now you basically understand how all of that happens and what controls all of that. यहाँ पर हम आज की गुफ्तगू को रोकते हैं. इस लेक्चर का मकसद ये था कि यू गेट अ ग्रिप ऑफ ऑल द बेसिक्स एंड नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी गोना बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दिस और होपफुली वी शुड बी एबल टू रीच ऑल द वे टू more sophisticated topics leading us to MFCCs इंशाल्लाह. So अपना ख्याल रखिएगा.